Who can open a saving account? Who cannot open a saving account? What are the features of saving account? See, these can be questions which an interviewer will ask you in the interview for appointment in a bank. So you should be very sure about these questions. I will take up these three questions in this video. First is, who can open a saving account with a bank? So when you start answering, you should number your replies. You should give a number to each reply. Number one, every Indian citizen of sound mind can open saving account. साउंड माइंड मीन्स जो समझता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समझ रहा है कि मैंने सेविंग अकाउंट खोला, 10,000 जमा किए, 2,000 निकाले, तो उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ. तो एवरी इंडियन सिटीजन ऑफ साउंड माइंड कैन ओपन सेविंग अकाउंट. नंबर टू, NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर सेटल्ड है वो. फिर PIOs. नंबर थ्री, पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन सिटीजन नहीं है, बाहर रहते हैं, तो दे कैन ऑल्सो ओपन सेविंग अकाउंट. फोर्थ इज ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज फॉर द पर्पज ऑफ grants and subsidies received from the government of India, they can also open saving account. In addition to that, number 4 is foreign nationals resident in India. Foreigner जो बाहर रहते हैं, बाहर के रहने वाले हैं पर settled इंडिया में हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, they can also open saving account. So there are every Indian citizen having sound mind. Number 2, NRIs. Number 3, PIOs. Number 4, government organizations. And number 5 is foreign national. They can open saving account. Now let us come to the second question. Who cannot open saving account? All business entities, all business organizations like partnership firms, limited companies, they cannot open saving account. Number 2, any person who is of unsound mind and has been declared insolvent, जो पैसे नहीं दे पा रहा, लोगों के उधार वापस नहीं कर पा रहा, he cannot open a saving account. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, हाउसिंग बोर्ड्स, ये अकाउंट नहीं खोल सकते हैं सेविंग अकाउंट. पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो कैन नॉट ओपन सेविंग अकाउंट. अब इसमें एक कैटेगरी और है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हु are dependent on budgetary allocation for their functioning. They also cannot open saving account. Let me sum up. Number 1, any person of unsound mind and has been declared insolvent, he cannot open. Number 2, business entities, trading organizations. Number 3, municipal corporation. Number 4, state electricity boards. Number 5, political parties. And number 6, government organization, government offices, departments who are dependent upon budgetary allocation for their functioning, they cannot open saving account. Now let us come to the third question, features of saving account. saving account में कैसे ट्रांजैक्शन होती है, सेविंग अकाउंट के बारे में आपको पूछा जाए. नंबर 1, सेविंग अकाउंट इज mainly open for the purpose of promoting saving among the people, के लोग पैसे सेव करें, बचाएं और बैंक में रखें. नंबर 2, सेविंग अकाउंट्स आर ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर. इसकी कोई मेच्योरिटी नहीं होती, जैसे फिक्स डिपॉजिट 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए हो सकता. सेविंग अकाउंट इज़ फॉर एवर, जितनी देर ट्रांजैक्शन होगी चलता रहेगा. सेविंग अकाउंट में इज़ ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर. नंबर 3, there is no restriction on number and amount of deposit transactions in account. जितनी बार भी कोई जमा करवाना चाहे, जितना पैसा जमा करवाना चाहे, there is no restriction. withdrawals पे कुछ restriction है, कुछ टाइप के अकाउंट हैं जिसमें withdrawal पे restriction है. Number 4, if the amount cash deposited in saving account is 50,000 and above, तो PAN card is required. कस्टमर को पैन कार्ड देना पड़ेगा बैंक को, तो 50,000 एंड अबव कैश जमा हो सकता है. नंबर 5,
People can withdraw money from saving account by using withdrawal slip or a check. Then they can also withdraw through an ATM card, debit card also. Number 6, somebody can use this saving account for making payments like electronic fund transfer, NEFT, National Electronic Fund Transfer, RTGS, real-time gross settlement. They can transfer money electronically from one account in a bank to another account in another bank. Then banks pay some amount of interest on this saving account also. So the rate of interest is very small. It varies from 2.5% to 7% from bank to bank. Now a customer can use this saving account for remitting his equated monthly installment, EMI. कहीं से लोन लिया है, वहाँ पे इंस्टॉलमेंट भेजनी है, यहाँ से जा सकता. So let us sum up. The features are saving account is mainly for the purpose of promoting saving. Number 2, saving accounts are of continuing nature. Number 3, there is no restriction on number and amount of deposit transactions. PAN card is required if the amount of deposit is 50,000 and above. The money can be withdrawn by using withdrawal slip, checks, debit cards. Small amount of interest is payable on saving account. The account can be utilized for making payments like EMIs, etc.